टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एनी होमोजेनियस पार्ट ऑफ द सिस्टम हैविंग physical and chemical properties throughout the same of entire solution. We must learn first of all concentration. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन में मास परसेंट है, मास मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन component upon total mass into 100. Let us examine example 20% mass by mass or weight by weight percent of urea in water, which means 20 gram urea 80 gram water. Everybody know that water is universal solvent, so that मास कंसंट्रेशन या मास परसेंटेज को इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इक्वल टू, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन होगा वो लीटर में होगा। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मास परसेंटेज एंड डेंसिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू, ये शॉर्ट मेथड है, मोलरिटी का अलग फॉर्मूला है 10 into mass percent into density upon molecular weight of solute. Next, concentration in terms of volume by volume. This concentration is used in generally pharmaceuticals. तो volume concentration in terms of volume by volume percent, volume of one component upon total volume into 100. नेक्स्ट है मोलैलिटी। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon weight of solvent in kg, weight of solvent in kg, सॉल्वेंट का वेट kg में होना चाहिए। तो which may be defined as number of moles of solute per kg of solvent, that is molality. Molality is the better concentration because it does not depend upon temperature. Next है
मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू number of moles of solute upon total number of moles of solution. Mole fraction of solvent number of moles of solvent upon total moles. Total, we know that total mole fraction equal to 1. Total mole fraction of solute, mole fraction of solute plus mole fraction of solvent equal to 1 because both are summation small n upon small n plus capital N upon small n plus capital N। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, n plus n इक्वल टू 1। तो टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन मालूम है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा।